Welcome to AGPG study लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी. Let's share experiment 6. But I have already shared experiment first to 5 in the previous video, so you can check them in the playlist. Let's start. Experiment 6 to study germination and viability test. So there are 8 materials required for viability test. So these are the materials. Theory: seed viability is the measure of how many seed in a lot are alive and could develop plants that will reproduce under appropriate field condition. Top of paper method. इस मेथड में मोस्ट सुटेबल फॉर स्पीसीज विद सीड्स, जो कुछ सुटेबल स्पीसीज हैं जो कि स्मॉलर देन 2 mm in depth diameter, such as small seeded vegetables and forage grasses. The seeds are germinated on top of moist absorbent paper in containers with close fitting lids to prevent moisture loss. Procedure: फर्स्टली हम इसके जो कंटेनर है उसको स्टरलाइज करेंगे 70 to 95% अल्कोहल से, फिर उसको 20% ब्लीच और हॉट वाटर पे 10 to 15 मिनट्स के लिए 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको सोक करेंगे, प्रॉपर स्टरलाइज करेंगे इस टाइप से. और सेकंड पॉइंट में है जो पेपर सबस्ट्रेट है उसको कंटेनर के बॉटम में रखेंगे. एंड थर्ड में उसको लेबल करेंगे विद परमानेंट मार्कर और पेंसिल. इन इन फोर्थ पॉइंट, ऐड द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. अगर डिस्टिल्ड वाटर अवेलेबल नहीं है तो उसमें बॉइल्ड वाटर या कूल टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं. द वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द पेपर substrate. On the size of container, for what man grade 181 filter paper in 9 cm petri dishes, 4 ml of water is required. The filter paper should not be so wet that a film of water for ground the finger when it is pressed. तो ये पॉइंट्स हैं. लास्ट पॉइंट है, कुछ सीड अगर जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, फिलामेंट शो कर रहे हैं, तो उसको अप्रोप्रिएट टेक्निक से ट्रीट किया जाता है जिससे कि जर्मिनेट हो सके. एंड कंडीशन द टेस्ट until all seeds have germinated or until no further germination has occurred after 2 consecutive counts. Experiment 7 to study the calculation of germination fertilizer requirement. Question: what will be the recommended doses of fertilizer for rice crop shown in the area of 1 hectare if nitrogen, potassium, phosphorus is supplied as 120, 60, 40 kg per hectare through यूरिया, DAP and MOP. सॉल्यूशन: ये कुछ फॉर्मूला है. Amount of fertilizer required in kilogram per hectare. And first we calculate the dose of DAP because DAP contains both nitrogen and potassium. And then calculation. ये कुत्ते कहाँ से आ गए ये? Calculating of nitrogen from urea and then calculating of potash from MOP. Result: the recommended dose of fertilizer for supplying 120, 60, 40 kg of nitrogen, phosphorus, potassium per hectare for rice crop is this. Urea is 209.83 kg per hectare. DAP is equal to 130.43 kg per hectare. MOP 66.66 kg per hectare. Experiment 8 to study the calculation on plant population and plant requirement. Theory: plant population refers to plant density which depends on number of
viable seeds, germination percentage and survival traits. प्लांट पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करता है? वाइबल सीड्स, जर्मिनेशन परसेंटेज एंड सर्वाइवल रेट्स. फॉर्मूला: plant population is equal to area meter square to the spacing of crop row to row and plant to plant meter square. Rice, wheat, sorghum, wheat. The solution is apply the formula, put the values, and this is answer. Water requirement of a crop. Requirement IR is equal to WR minus ER plus S, where IR irrigation requirement, WR water requirement of a crop, ER depth of shallow water table. Irrigation requirement. It refers to a quantity of water exclusive of effective rainfall and soil profile. Contribution from that of shallow water table also required for crop production. This amount to net irrigation requirement plus other economical avoidable losses. Experiment 9. To study soil moisture measuring devices. Materials required: tensiometer, neutron moisture meter, third pressure membrane and pressure plate apparatus. Theory: tensiometer are also aerometers since they are used in irrigation scheduling. A tensiometer consists of a long tube with a porous ceramic cup at one end. The other end of the tube is closed with rubber cork. A vacuum gauge is fitted to the side of the tube. The length of the tube varies from 30 cm to 100 cm depending on the depth at which moisture is to be estimated. This is the diagram of tensiometer. सेकंड पॉइंट, पहले क्रोन बार की हेल्प से हम उस सॉइल में एक होल करेंगे एक डिज़ायर्ड डेप्थ का, जिससे कि हम उस टेंशियोमीटर को उसमें प्लेस करके on all the sides of on all the sides from the soils to be in close contact with the ceramic cup, जैसे कि where the tube is filled with water slowly so as to be to mold formation of air bubbles. As soil dries, water from the porous cup enters the soil. Due to depletion of water in the tube, vacuum is measured with vacuum gauge. Fourth point. Fifth point, refilling of tube is necessary after each irrigation or rainfall. Last point, tensiometer is sensitive up to 0.9 bars of soil moisture. Then second material is neutron moisture meter. Soil moisture can be estimated quickly and continuously with neutron moisture meter without disturbing the soil. उसमें soil को disturb करना पड़ता था tensiometer में, इसमें without disturbing soil you use this. Soil moisture can be estimated from the volume of water. Second point, neutron moisture meter consists of probe and scalar on rate meter. The probe contains fast neutron source which may be mixture of sodium and beryllium or americium and beryllium. Then जो एक्सेस ट्यूब है एल्यूमिनियम ट्यूब्स की 50 to 100 length and are placed in the field where moisture has to be estimated. Load is lowered into excess to tube to be desired depth. Fast neutrons are released from the probe. It is scattered into the soil. When the neutrons encounter nuclei of hydrogen atoms of water, their speed is reduced. Last point is
Moisture content of soil can be known for the calibration curve with the slow motion electrons. कुछ दो ड्रॉबैक्स हैं इस इंस्ट्रूमेंट के, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है एंड मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम सैलो टॉप लेयर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। सैलो टॉप लेयर का ये मॉइस्चर कंटेंट एस्टिमेट नहीं कर पाता है। द फास्ट न्यूट्रॉन कैन ऑल्सो बी स्लोड बाई अदर सोर्सेज ऑफ एंड लास्ट इज प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट apparatus. Pressure membrane pressure plate apparatus is generally used to estimate field capacity, permanent building point, and moisture content at different pressure. Samples are taken out the oven that for determining the moisture content. Experiment 10. Identification of kharif crops and seeds. Crops and seeds are too often confused as a student. If he does not have proper acquaintance previously, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, सिमिलरिटीज़ जो क्रॉप्स की जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक प्लांट स्ट्रक्चर, साइज ऑफ द एयर हेड, कलर एंड साइज ऑफ द सीड्स, लेट्स टू अ लॉट ऑफ confusion especially for those not having farming background or lack of exposure to such crops and seed. Therefore, maintenance of the crop categories is a mandatory for each college form. So ये कुछ कैटेगरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है फॉर ईच कॉलेज फॉर्म। इन क्रॉप क्राइटेरिया different crop are sown in each land is means of practices for students instructional purpose. Different types of field crops like cereals, pulses, oil seeds, commercial crops, fiber, etc. are grown in a limited are considered the season of growing at a time with the purpose of studying detailed characteristics and demonstration is called cafeteria. First point is डिफरेंट क्रॉप के लाइफ पीरियड को जाने, और सेकंड पॉइंट है टू नो द क्लाइमेटिक इफेक्ट, क्या डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप में क्या उसका क्लाइमेटिक इफेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट है पीरियोडिकल ग्रोथ हैबिट ऑफ क्रॉप, लाइक हाइट एंड विड्थ ऑफ क्रॉप प्लांट्स, एंड फोर्थ इज different to know the different stage of crop which the crops are affected by insects, pests and diseases and nature of damage. Last, to identify two similar crops and initial stage of crop growth. Example sorghum and pearl millet. Material required crop, crop museum, crop cafeteria, seed museum. Name of crops, cereals and millets. Rice. Botanical name Oryza sativa. Family Gramineae. Varieties 𝒌𝒊𝒅𝒐, GR3 and some more. Second maize, Zea maize, family Gramineae. जो सीरियल्स से बिलोंग करते हैं उन सबको ग्रैमिनी पोएसी के अंडर रखा जाता है। sorghum bicolor, pearl millet Penicetum glaucum, fifth wari Pericum milior, कोदो millet Paspalum scorbiculatum, seven finger millet Eleusine caracona, and then name of crop pulses. पल्सेस क्रॉप्स लेग्यूम्स क्रॉप्स सारी लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। पिजन पी कजानस काजन, सेकंड ग्रीन ग्राम फेजियोलस ओरोस, ब्लैक ग्राम फेजियोलस मुंगो, क्लस्टर बीन साइमोप्सिस टेट्रागोनलोबा,
Cowpea vigina ingulata. Oil seeds, groundnut, Arachis hypogea, castor rhizinus communis, Sesame indicum, Petiliaceae, soybean glycine max, Leguminosae or Fabaceae, sunflowers, Hilarius anus astraceae, and fiber crops, cotton, Gossypium hirsutum malvaceae, jute, Corchorus olitorius, and Corchorus capsularis tiliaceae. Sorghum vulgare, Graminy poaceae, Cowpea vagina sinensis, Leguminosae, Napier hybrid, Panicetum purpureum, Graminy, maize, Zea maize, cash crops, beedi tobacco, Nicotiana tabacum, Solanaceae, green manure crops. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.